Uh, which other example? I think it was one example like, Rainfall, sir. yeah, rainfall. Correct. One example was rainfall. Okay. And So second was apple. yeah. So Gram of what 50. is the rainfall? Rainfall, you can say frequency. Anyone? Sir, 31. Rainfall frequency. Anyone tell? 31, sir. Yeah, total 31. Just tell me the last column and what are the frequencies are there? Like 6, 7, like that. 6, 7, 6, 30 7. to 56, Right. 7, Seven. 6. Yeah. So I will just take that number because I cannot able to add the entire thing. So I will take third example will be example based on example based on rainfall data. Your total number of observation, that is your n, is 31, and frequencies are uh, it was 6 comma 7, again 6 comma 7, 2 comma 3, right? Yes, sir. Yeah. So everybody please check that, check this whether you are getting the same answers or not. Please do cross check everybody. Sir, same answer. सबका सेम आ रहा है आंसर? अच्छा, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन क्या दिया था, कौन सा एग्जांपल है वो? Sir, व्हाट इज gram of 50 apples. ओके, 50 apples. Is the interval is given or you have to form the interval? Found the interval. We have ढूंढना to पड़ता है. form the interval, right? Yes, sir. Yeah. So now tell me the frequencies. I think n was okay. So I'll just take down this. I think this is the weight. For example based on Apple. Weight in grams weights in gram, of 50 apples. weights in gram क्या है ये भी? of 50 apples. Okay, and that means n we have 50. Can you tell me a frequency here? Anyone? Yes. Frequencies. मालूम नहीं क्या है सर, ये वाला क्वेश्चन आया नहीं सर, क्या कर रहे थे, आया नहीं? समझ नहीं आया. नहीं सर. अच्छा, तो ठीक है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें क्या है. चलो, कोई बात. तो आई होप यू हैव डेटा विथ यू. डेटा है ना सबके पास? Yes, यस sir. सर, यस सर. फाइन, नो प्रॉब्लम. यस यस अच्छा, किसी को भी नहीं आया? ऐसा कोई है जिसको आया? आया है सर, बट सर क्लास फिट्स मैंने 15 लिया है देन. हाँ, क्लास फिट्स सर 15 लिया हूँ सर, बट थोड़ा कम है सर. 16.5 समथिंग आ रहा था सर. हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन में सर 15 लिया हूँ क्लास फिट्स. हाँ. निकाला. हाँ सर, थोड़ा. अच्छा, अच्छा. हाँ सर, लास्ट अपर क्लास लिमिट से थोड़ा गलत हो गया था, तो उसके बाद चेंज किया. अच्छा, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वापस देख लेते हैं कैसे हम लोग को ये बनाना है, क्लासेस बनाना है. ओके. तो सबसे पहले हम लोग n लिखेंगे यहाँ पे. तो n हम लोग लेंगे 50 because we have given total 50 apples. अपने को based on n we need to find out k, right? K is called as number of classes. क्लासेस. तो k का फॉर्मूला क्या है? 1 plus 3.222, I think, right? Something like that. I don't remember the formula. यस 3.32 सर, लॉग ऑफ एन. into log base 10
just a minute, right? Log base 10 into of 50. इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक k was coming approximate 7, Yes, sir. right? So this is approximate 7. एक बार k 7 मिल गया तो मुझे विड्थ निकालना पड़ेगा. विड्थ का फॉर्मूला क्या है? Width is equal Upper to class limit minus lower maximum class object minus limit Maximum divided by observation number minus of class. minimum observation upon K. maximum minus minimum upon k. So what is your maximum? I think maximum is 205. 205. Okay, 205 minus minimum 90. 90 upon 7. कितना आता है approximate? Do calculation. 16.5 आ रहा है. हाँ? 16.5. 16.42. 16.42. Okay. 16.42. 16.42. अच्छा. So your answer, so your width is approximate coming 16.42. Fine. Sir, do we take 16.5? No. Your last value is 205, right? Last value is 205. Yes. So, if I'm taking width is 15, minimum is 19. Minimum is 19. Sorry, 90. And we need to create a 7 class. 7 class. Okay. But if we approximate this to 15, is that okay? Yes, I have done it like that. अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो विड्थ हम लोग कंसिडर करते हैं ना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अभी किसी का आंसर सपोज 18 आया, सपोज योर विड्थ इज अप्रोक्सीमेट 18.5, यू कंसिडर अप टू 20, यू कंसिडर टू इट इज 20. क्या होता है व्हेन यू कंसिडर इट इज 20 ना, देन इन दैट सिनेरियो ना, योर there will be not confusion. But if you consider 16.5 or 16, तो क्लास इंटरवल बनाने में आपको डिफिकल्टी होती है. तो आप हमेशा याद रखो, so it's a multiple of like 20, 15, 10. Do it always like that. So what is your first interval? It is 90 to 105. 90 to 105. Then second interval, 105 to 120. yes, 105 to 120. 120 to 135. It is right. तो फ्रीक्वेंसी 120. बोल दो सर इसका. Sorry, फ्रीक्वेंसी सर हाँ फ्रीक्वेंसी क्या? है सर. फ्रीक्वेंसी इसका 93094 आंसर सर. एक मिनट, मैं जस्ट लिख लेता हूँ. Then we have 150 to 165. 165 and 165 to 5 to 180. 180, 180 to 195. 180 to 195 and 195 to 210. 150. So this is your CI, and here we have a frequency. So your first frequency is 110. So 110 किधर आएगा? इधर आएगा. Means one can use tally mark. One can write your tally mark, and one can write your frequency. So first frequency कितना आ रहा है? 9. 9. 13. Second 13 or 12? I think 13 सर. अच्छा. लिख लीजिए सर. भी गलत हो सकता है कोई बताए. As per my calculation,
It should be 12. Okay, sir. Then next बोलिए. 9. 9. हाँ, तो इधर आपने एक इधर इधर ऊपर नीचे हुआ आपका. Okay, sir. बाकी I think 1 4. This is 4. 5. Yes, sir. 4 1 4 1 5 8 5 1 8. 4 1 1 5 5 1 5 8 1 8 1. So I think ये करेक्ट है. तो आपका क्या हो गया मालूम है? यहाँ कहीं 1 एक्सचेंज into हो गया. 5 का सर ऊपर नीचे हो गया. यहाँ कहीं एक्सचेंज हो गया आपका. मीन्स मे बी 120 you have consider here or maybe like that something. समझ रहे हैं? तो Yes, sir. Yes, sir. वो प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा चेक कर लो. तो टोटल इट कम्स टू बी द 50. सर हाँ बेटा बोलिए. नंबर ऑफ क्लासेस 7 कंसीडर किया है ना अप्रोक्सीमेट. नंबर ऑफ क्लासेस 7. हाँ तो 7 है क्या अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा 8 हो गया. फाइन 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 फाइन. करेक्ट. ठीक है. तो क्या करेंगे अभी देखो. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? सिंस वी हैव कंसीडर हियर 7 बट यहाँ पे क्लासेस कितना आ रहा है मेरा? 8 आ रहा है. तो क्लासेस 7 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सॉरी सर 19 को क्लास विथ कंसीडर करना चाहिए था सर. सॉरी वो आएगा सर. क्लास विथ 17 कंसीडर करके चलिए सर. आएगा वो. हाँ 17 तो ले सकते हैं हम लोग. 17 ले या फिर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर 20. अगर 20 लेते तो क्या क्या आता है? इज दैट 7 क्लास? चेक इट. जस्ट चेकड आउट. सो No, 90 sir. से 7 class. 7 class. 90 से अगर 1 इसका लेते हैं 20 का लेते हैं तो कितना 6 आएगा? class आएंगे सर टोटल. 110 110 से 130 130 130 से 150 150 to 170 150 to 170 170 to 190 and 170 से 190 एंड 190 से 210. 210. कितना हो गया? 1 2 6 3 classes. 4 5 6 एंड 210. अच्छा बट मैक्सिमम कितना है मेरा? 205. 205. हाँ तो मतलब ये 20 नहीं ले सकते हम लोग. वी कैन नॉट टेक 20. तो अपने को ये सिचुएशन में देखो क्या हो रहा मालूम है? ये सिचुएशन में इधर यू अप्रोक्सीमेट दिस अप टू 15 या फिर यू अप्रोक्सीमेट दिस टू. मीन्स यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट इधर हियर और इधर हियर. बट हियर आई थिंक बिफोर इन द बिफोर एग्जांपल इट वाज 6.4. इसको ऑलरेडी हमने 7 लिखा हुआ है. राइट इसको ऑलरेडी हमने 7 लिखा हुआ है. तो बेटर होगा कि आप इसको अप्रोक्सीमेट करो. better we approximate this. Okay, so this method fails because here we have created so many class which is more than 8. तो ये फेल हो जाएगा आपका. And now this is the difficult task because you have to approximate the data around 17. तो आपको properly 17 का proper difference लेना है. प्रॉपर एकदम डिफरेंस लेके फिर फ्रीक्वेंसी बनाना है. सो इट इज 90 टू 17 का डिफरेंस लेना पड़ेगा. सो 90 प्लस 17 मीन्स अप्रोक्सीमेट 107. देन 107 से लेके फिर 17 ऐड करो 124 एंड सो ऑन. यू हैव टू कंसीडर टिल 7th वन. ओके और फिर उसका फ्रीक्वेंसी निकालो, टैली मार्क निकालो एंड आप फिर निकाल सकते हो. तो आई थिंक लास्ट क्लास क्या आएगा? 124 प्लस 17 141 141 प्लस 17 158 209 आएगा. 209 आएगा सर. हाँ 209. 209 राइट. तो 209 में 205 आ जाएगा आपका. 192 1 2 3 4 5 6 plus 17 209 correct. This is 124, this is 141
158, 175, 192. Now this frequency is also going to be changed. Okay, so I think you understood the conceptual things which is important. Okay, just create and let me know what is that of frequencies. Just create it and let me know what are the frequencies. क्या आता है? सर हम्म समटाइम्स हम लोग सर ग्रेटर देन एंड लेस देन का भी सिंबल यूज करते हैं ना, मतलब देन बिफोर मतलब अगर 7 फ्रीक्वेंसीज बनानी है हम्म एंड एक सर सर 7 क्लासेस बनाने हैं एंड एक क्लास आ रहा है, तो सर लास्ट वाला हम लोग सर मतलब लेस देन ग्रेटर देन वो लिख सकते हैं ना सर 195। हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन एंडेड क्लासेस। ये सर वो बात कर सकते हैं सर हम लोग। हाँ, वो कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा टाइम के बाद, मतलब जस्ट अभी एक दो लेक्चर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी आपके क्वेश्चंस में ना ऐसा फ्रीक्वेंसी आता है जो बहुत बड़ा होता है, ये सर लाइक से 300। तो जब हाँ 300 का एक डेटा मेरा हो गया तो उसके हिसाब से बहुत सारा क्लास बन जाएगा आपको। ये इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 209। ग्रेटर देन 209 बोलेंगे तो 300 ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। ये ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ओपन एंडेड क्लासेस। बट जनरली क्या होता है, ओपन एंडेड क्लासेस में वी डोंट हैव much things, so we ओके cannot do more thing in that case. Can completed the frequencies? Anyone? Yes, sir. Yeah. Just give me the number of, like, what are the numbers? First 10, 10. Others, please verify. Yeah. 17, 1, 7, 7, 7, 1, 1, 2, 2, 12,
12, 1. 1. Yes. Anyone else who have checked it? Cross check it. I hope you just do the calculation, maybe you will be get the same result. इसमें क्या है, इसमें मैं concepts introduce कर रहा हूँ और उसको हम लोग बोलेंगे, I think this concept I have already introduced, that is called uh, relative frequency. That is called relative frequency. So what this relative frequency says, maybe you are studying the probability concepts, right? Probability आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ा भी है, I think बहुत सारी चीजें अपने उसमें complete भी कर चुके हैं, right? So what this particular relative concept says, so this basically relative frequency, sorry, in relative frequency the formula is f upon n. It means it's like a 10 upon 50, 17 upon 50, 7 upon 50. What actually it is? Can anyone tell me what is this actually? What is this actually all? प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं सर कि उस क्लास के अंदर का कोई भी अगर Exactly. So these are all probabilities values. But these probability now we have assumed in terms of frequencies, right? We have assumed in terms of frequencies. So relative frequency is basically your probability of that particular event occurred. So if I'm saying here my event is like weight of particular apple lies in this particular range, whose probability is 10 upon 50. Again, the probability of weight of particular apple lies between 124 to 141, is probability is 7 by 50. So whenever we are interested to know the probability of that particular event, we go for always relative frequency. Relative frequency is nothing but your probability. Relative frequency is nothing but your probability, and we know always it is lies between 0 to 1, right? Always it is lies between 0 to 1. The probability can be 0 and it can be 1. 1. Yeah. So if it is 0, that means the event is exist but the probability is 0. If it is 1, then you are sure about the event is certain event. Okay. So these concepts you are going to study thoroughly in the probability concepts. Now this is some question. This is in terms of relative frequency. But suppose I ask anyone, can anyone tell me? Can anyone tell me what will be the class boundary of? Understand the problem. Understand the problem. What will be class boundary of? Class boundaries for fifth class. क्या रहेगा? फिफ्थ क्लास का क्लास बाउंड्री क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5.
तो फिफ्थ की क्लास बाउंड्री क्या मिला मुझे? 158 and 175. 158 to 175. Absolutely right. So sorry, see, class boundary they are saying, na? So we need to take what? Fourth class. So it is going to be 175 minus 158. What is difference? 20. Just a minute. 85 to 95. 17. सर Right. 17. So I may say your class boundary, right, 158 to 175. And but if they are asking what will be width of this class interval, class boundary, then you take the difference. Is that clear? What will be width of fifth class? Then you may take difference of 175 minus 158, approximate 72. Now, can you tell me how many number of apples whose weights are below 124? Can you tell me? 27. 27. कैसे मालूम पड़ गया? Cumulative frequency, sir. हाँ? Cumulative frequency, sir. Cumulative frequency. तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट जनरेट होता है. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको प्लस इसको ऐड कर रहे हैं. अगर सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड टू नो how many number of apples below 158, तो क्या करोगे आप लोग? This plus 10 this plus 7, plus 10 plus this 7 plus plus 1. this, right? That means, yes, that means we are adding the go on adding these frequencies one by one to get the cumulative frequency. So these are the basic questions can be expected in your examination. For example, how many number of apples whose weight above 192? 1. 1, सर 1. 1. right? तो 192 मतलब इधर भी है, बट इधर इंक्लूड होता नहीं है, बट इधर इंक्लूड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So 192, above 192 we have one apple. So these many examples you can start doing practice. Okay, and this is all basic questions. Now there are one example where just now one student was talking about the same example, like we have the class above 45 like and below 75, like that data means when we have a data like very skewed data. What is skewed data? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेम प्रॉब्लम में सपोज मेरा एक ऑब्जर्वेशन 19 है 19, तो मैं क्या करूंगा? ये प्रॉब्लम में मैं क्या करूंगा? मैं एक क्लास और बनाऊंगा लेस देन 90 का. So this is the very important note. क्या नोट है? अगर सपोज मेरा ये वेट के एग्जांपल डेटा में मेरा एक एप्पल ऐसा है जिसका वेट 19 है 19, तो क्या होगा? ये डेटा बहुत स्क्यूड हो जाएगा. अगर मैं तो उसके हिसाब से आप डेटा कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ वो बहुत स्क्यूड बनेगा. स्क्यूड मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राफ होगा वो एक साइड ही मूव होगा. इट इज मूविंग टू द नेगेटिव साइड. और कभी कभी मेरा कोई एक एप्पल है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी हैवी, इट कैन बी पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट? तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग
ओपन एंडेड क्लास बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्लास. इट इज क्लोज ना, 90 to 107 closed है, 107 से 124 it is closed. But if I am saying below 90, above I can say, let's say इधर कितना है 209 है ना, so let's say about 209. Okay, so these are basically called as open ended classes. Open ended means it is open. Okay, it is open ended class, and used this is used when we have outliers in data. This is a new term which is introduced here, outlier. Okay, what is this outlier? So as I mentioned, maybe if I'm assuming my one apple weight is 19, मतलब मेरा एक एप्पल का वेट 19 हो गया, 19 हो गया, मतलब क्या हो गया, एक्चुअली the shape and size are approximate same, but the quality of apple, or maybe due to some technical problem with the apple production में कुछ तो problem हो गया. It may happen some insect will be the captured and the weight is not increased of that particular apple. So because of that data, because of that particular observation, your whole distribution, I can say whole structure of that particular shape of this distribution can be changed. Okay, so वो change ना हो इसके लिए हम लोग क्या use करते हैं, open ended classes. So one can go with always the open ended classes. That is also one part which is important. Okay, so you may take the note of that. That is the you can always go with. Okay, any question is there so far? No, sir. Somebody is just see I saying 107 class में आए या second 107 second class में आएगा बेटा. शिफा खान, कभी भी याद रखो आप, जो 107 frequency होता है ना, that is always included in the second class. Yeah, I think somebody has given answer. Good, good. Yeah, Anshari is also. One 41 fourth class में आएगा, right? Fine, fine. Good. You have given answers. That means my problem is solved. Okay. Anyways, this is nothing but the concepts of univariate frequency distribution. Okay. This is the concepts of univariate. So here you can see here we are talking about only the single variable like number of children, marks obtained by the students, like we have given rainfall data, we have given weight. So we are talking about only one variable. But what happen if we consider two variable? अगर हम लोग दो वेरिएबल की बात करेंगे तो उस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी क्या होता है, दो वेरिएबल की बात क्यों करते हैं, मतलब वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द बाई, वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए. यूनिवेरिएट ठीक है, चलो यूनिवेरिएट मतलब एक वेरिएबल होता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट आउट करते हैं. बट वाई वी आर मूविंग टू द बाइवेरिएट, दैट क्वेश्चन इज अराइजिंग. See, when you talk about height of particular students, height of just think. Statistics means thinking. Statistics means thinking. So if 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 your thinking is not smart, that means your statistics is not smart. Okay, so you have to think smartly to get your statistics smarter. Okay, so why we are talking about the bivariate frequency distribution? That is a very important. When you talk about the example of, let's say, height of particular students, okay, so are you dealing with only height of particular students?
मतलब अगर मैं हाइट की बात करूँ तो केवल मैं हाइट ही बोलता हूँ क्या? इज दैट हाइट इज डिपेंडेंट ऑन देयर वेट ऑल्सो, राइट? अगर मैं सिर्फ हाइट की बात करूंगा तो like we are talking about only univariate, we are not talking about the bivariate. But if I'm talking about, let's say, height and weight, दो दो वेरिएबल की बात करता हूँ, हाइट एंड वेट. सो हाइट एंड वेट, तो अगर कोई स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का इफ आई एम कंसिडर देयर हाइट, so obvious there is some relation with weight, some relation with the weight. If the height is very long, he is very like very big person, then what could be their weight? Or weight is very high, then what could be their height? And vice versa, right? So that's why there is a concept of univariate arises. That's why there is a concept of univariate arises. One example. Second example, I may ask you, how many students score 90% in your HS examination? That's your marks obtained in your HSC examination. But is only the marks is a factor? Is only the marks is a factor you're talking about? So marks is dependent on how many hours you study, na? So here I'm talking about number of hours of study and and marks obtained. Marks obtained. So obvious they are related. So ऐसा नहीं है कि फ्री में मार्क्स पा गए और आप अच्छा स्कोर 90% लेके आए. No, it's not like that. So if you increase the number of hours, means if you start studying, means increases the number of hours, obviously their marks will be the increases. Obviously their marks will be the increases. So that's why there is a concept arises bivariate data. Bivariate data means you must get some relation. You must get some relation. Okay. And these data are always considered in paired. Let's say height data, weight data. मतलब कभी भी ये paired में होता है कभी. Are getting it is in paired form. तो इसको हम लोग one observation consider करते हैं. We consider one observation. So x comma y will be considered one observation, and so on and so on. Now based on that, one can get marginal distribution of x, one can get marginal distribution of y, and so on. Okay, so that we can do continuous. But up important factor क्या है? You must know what is an application. What is an application of bivariate data? क्यों हम लोग bivariate data की बात कर रहे हैं? वो important है, ठीक है? बाकी सब तो कैलकुलेशन है. बाकी सब you do certain calculation, like problem दिया है उसको solve करो, वो सब तो सब कर लेंगे. That is not very big task. Okay, so you can just understand these concepts. Okay, so what do we do now? अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, and then we can move ahead. Take down example number 1. Example number 1. Consider, take down the following pair data. The following paired data is on age of husband, that you can call x, and age of wife. Let's say that is y. At the
at the, you can take down with me, at the time of marriage for 20 couples. For 20 couples. So we'll take down the data 24, 18, 26, 19, 27, 20, 25, oh, किधर है मैं? हाँ, 25, 18, and 28, 21, then 24, 19, 27, 19, 28, 20, 25, 19, 26, 20, 25, 18, 25, 18 is done, right? 10 is over now. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 26, 19, 27, 20, 25, 20, some missing, 26, 11, 26, 19, 27, 25, 20, 27, 21, 26, 20, 26, 20, sorry, something 26 twice written, 25, 18, 26, 21, 26, 18, and finally 26, 19. Prepare a bivariate frequency table for this data and also obtain marginal frequency distribution for age of husband and for age of wife. And I will going to add one more question, but maybe in the next class. Just leave two line. Just leave two line here. This is the one part. Second, we need to obtain the conditional distribution of conditional frequency distribution.
frequency distribution of age of husband when age of wife will be dash. That you can, I will tell you the next class. Similarly, conditional frequency distribution of age of wife when age of husband is dash. That I will tell you the next class. Okay, so this question we can solve in next class. So it will consume a lot of time, so that we can do the solution in the next class. Okay. So any question is there? सर Yes, बेटा बोलिए. बाइवरेट फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है ना सर कि एक्स वाई पे डिपेंड है या वाई एक्स पे डिपेंड है. Sorry. एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर देना सर बाइवरेट फ्रीक्वेंसी को. Right. हाँ सर, तो उसमें ये जरूरी नहीं ना सर कि एक्स वाई पर डिपेंड हो या वाई एक्स पर डिपेंड हो. Not necessary. लेकिन बाइवेरिएट का जो कंसेप्ट है, हम लोग जब दो वेरिएबल की बात करते हैं यस सर. तो जरूर उसमें हम लोग कुछ रिलेशन निकालने की बात करते हैं. आप समझ रहे हो? यस सर. तभी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बाइवेरिएट. जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल इनकम, तो इनकम जैसे मैंने बोला मुझे याद आ गया कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना है. मतलब Yes, अगर sir. मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? यस यस. या फिर मैं इनकम अगर मेरा इतना है तो मेरा सेविंग कितना है. मतलब ऑटोमेटिक मेरा रिलेशन मालूम पड़ जाता है मुझे. मतलब नए वेरिएबल कैसे जनरेट होंगे तो concepts होते हैं. यस सर. Any other question? Yes, anyone? No question? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे. एंड लेट्स सी in the next class. The next class will be tomorrow at 12 o'clock, na? I think it's Wednesday 12 o'clock we have lecture. Fine. Yes, sir. Okay, so we can meet tomorrow at 2 o'clock and have a good luck. Try these, not these like bivariate, but try, I think you can go with that practical number third in, and try to solve as many example you can solve in that practical. Okay, because एक बार बाइवेरिएट कंप्लीट हुआ अपना तो हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे. तो वो प्रैक्टिकल आपका पूरा बेस्ड ऑन आपके इसके ऊपर ही होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही होगा. ओके, सो एटलीस्ट यू कैन ओपन द प्रैक्टिकल एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन. Okay sir. So Sir, see you can you and show us the names those who have submitted practical too? sorry. Can you show us the name those who have submitted practical too? That I will, because I have not so far collected the data. Okay, sir. so I will definitely I will, if today possible I will organize it properly, and in next class I will definitely show you. Huh? Okay, sir. Thank you. Yeah, thank you. So good luck. See you on the next class.